Okay, everyone, welcome to the Generation Gap podcast. I'm Mir, that's Daniel Ahmed, and you'll be glad to know that this program is sponsored by Bradman's toothpaste, kills 99.94% of all germs. So, I, yeah, this book was not prepped. That's why this was new it's to me as almost well. 100, you know, it's almost 100. It's not far off. Yeah. Just- That one dang germ got away. So, anyway, so we're here to do a short react on the Pakistan World Cup T20 team that's just recently been announced. मैंने actually उसको देखा था. How I found out was the video that PCB released. तुमने देखी थी वो वाली? जिसका वो टिकट पकड़ा रहे हैं. Oh, that was a thing that I think someone in our group sent, right? हाँ, you've seen it. मैंने पहले देखा था. I think I saw it around like maybe 5:30 or 6 के आसपास उन्होंने शायद उसको रिलीज किया था. तो मैंने उस टाइम पे देखा था. And that's how I found out कि अच्छा कौन बंदा है. And because of that कुछ लोग थे जो मैं recognize भी नहीं किया. अच्छा ये कौन है यार? I think it was मोहम्मद हारिस से कौन था. उसको जब उन्होंने टिकट दिया मैंने कहा I don't recognize this guy. ये कौन है? किसको दे रहे हैं टिकट? But he actually has a decent record, I guess, at least in terms of strike rate. थोड़ा सा उनको था कि यार हमें को बंदा चाहिए जो स्ट्राइक रेट के हिसाब से था. जनरल इंप्रेशन वाज एक्सेप्ट व्हेन आई स्पेशली व्हेन आई फाउंड आउट कि फखर को रिजर्व्स में लेके जा रहे हैं. आई थिंक ओवरऑल दे ट्राई टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द एशिया कप, but I think we can get into the mechanics of that, or at least the more details of that once we get into the squad. So squad का मैं one by one देखता हूँ. मेरे सामने it's not in the same order as it was in the video, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने सबसे पहले बाबर को और रिजवान को दिखाया था. Also by the way, उसी वीडियो में if you noticed, I don't know अगर आपने देखा था कि नहीं देखा था, सबको टिकट पकड़ा रहे थे वर्ल्ड कप वाले, वो जो ब्लू कलर के टिकट्स थे एक एक करके सबको दे रहे हैं. और जो उसकी थी क्या नाम है शाहीन वाली वीडियो, शाहीन को लिटरली उन्होंने व्हाइट रंग का एक कागज पकड़ा दिया था. पता नहीं कि वो टिकट से मिला नहीं था या क्या सीन हुआ था. गो बैक एंड चेक द वीडियो. शाहीन गेट्स लाइक अ व्हाइट पेपर और समथिंग. उन्होंने कहा भाई तूने तो आना ही आना है, हम तुम्हें नहीं भी टिकट देंगे, तुमने आ जाना है. तुम्हारी जगह इतनी ऑटोमेटिक है कि हमने ये पकड़ा दिया तो भाई आप तो जा रहे हैं, हर किसी को पता है आपने जाना है. सो बेसिकली क्या Wait, नाम है I अपना, haven't seen it. you haven't seen the video? Is it like It's like a 2-minute video PCB ने अपने उस पर किया हुआ था जिसमें सबको जाकर टिकट पकड़ा रहे हैं. तो चेक इट लेटर, क्योंकि शाहीन वाली वीडियो में ना मुझे लगता है उन्होंने बाद में कुछ किया था रेट्रोएक्टिवली, क्योंकि उसका तो एक मेरे ख्याल में शूट भी किसी फोन कैमरे के ऊपर हुआ था और उनके पास टिकट भी नहीं था. इट्स लाइक अ ब्लू कलर टिकट जो आईसीसी का बनाया हुआ था, जो हर कैरेक्टर को, हर प्लेयर को जाकर पकड़ा रहे थे. तो क्या नाम है अपना, इसमें मेरे ख्याल में जो शाहीन वाला था, ही वाज इन सम अदर प्लेस, तो किसी ने कैमरे के साथ शूट किया हुआ था, फोन कैमरे के साथ, और उसको पकड़ाया भी उन्होंने व्हाइट कलर का पेपर से पकड़ाया था. वो इट्स नॉट इवन द टिकट तो बाकी सबको दे रहे थे. तो वो भी एक था. और मेरे ख्याल से somehow it was implying that Naseem Shah and I don't know कौन सा एक और प्लेयर था who were actually in the same room, क्योंकि एक कमरे से दो निकल के ना उसमें से टिकट ले रहे होते हैं. So बहरहाल चेक कर लेना उस वीडियो को बाद में. मैं स्क्वाड का यहाँ पे करता हूँ in the order that I am seeing it right now on the PCB website. तो सबसे पहले तो we're seeing Shadab Khan. That's like an obvious thing. I think no one can really argue that one. आसिफ अली, I think इस पे हमारी डिस्कशन हुई थी कि आसिफ अली की जगह बनती है नहीं बनती. I think you had a point on that. What exactly was it? Yeah, it was like जगह फिलहाल तो बनती है. That's because हमारे पास कोई genuine वो धोनी टाइप का finisher नहीं. The moment we have a more season. हाँ, in the absence of better options, we can't really afford to drop him, to be honest. उसके बाद है हैदर अली. नाउ हैदर अली वही बात है कि दिस इज लाइक वन ऑफ दोज चॉइसेस जिसके बारे में हर कोई स्क्रीम कर रहे थे, हैदर अली को क्यों नहीं रख रहे, हैदर अली को क्यों नहीं रख रहे. वेल अब उन्होंने हैदर अली को रख लिया है, तो अब देखते हैं क्या होगा. बिकॉज वही बात है, मेरे एक फियर्स थे डिपेंडिंग ऑन द few people who've been saying कि यार his recent form hasn't been that great. सिर्फ टीम में ले भी जाएंगे तो he's not going to do much because he's kind of changed his game, or his game has been changed by the management. He's not as much of a stroke player as he used to be. So that might be a bit of an issue once he actually gets a chance to play. But we'll see कि हैदर अली क्या करता है. But yeah, बस वही बात है कि और कोई, there's just not too many hitters in the squad overall. Let's be honest. And उसके बाद हमारा हारिस रऊफ. That's again,
I guess an obvious inclusion at this point. We have Iftikhar Ahmed. Again, yes, slightly controversial because again ये तीन लोग थे जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की नजरें थी, including Iftikhar, including Asif. तीन बल्कि Iftikhar, Asif, and Iftikhar. There was Fakhr and there was Khushtil, जिन पे सब लोगों का था कि इन तीन की जगह नहीं बनती, and all three of them have actually gotten into the squad. उनमें से किसी को निकाला नहीं है. Only person demoted somewhat is Fakhr, जिसको वो reserves में लेके जा रहे हैं and not in the main squad. तो and you know वो वाला चक्कर. Considering the state of the team right now, जिस तरह वो इंजर हो रहे हैं, फखर की टीम में जगह बन जानी है. So like क्या जाएगा. वैसे हसन तक को जगह मिल गई इवेंचुअली. उसको एक मैच तो खिलाया दिया उन्होंने. हसन चला नहीं उसमें अनफॉर्चुनेटली. ऑल्दो वही बात है कि हम वी वर होपिंग दैट ही वुड डू बेटर ऑनेस्टली, बट उसके भी जगह नहीं बनी. लेकिन a lot of people have been talking about like हैदर को लेके आओ और शान मसूद को लेके आओ and all that. उनको मतलब obviously they have been brought back in, but let's get back to the list. So इफ्तिखार है, खुशदिल है. Again, the person I would have dropped without any qualms would have been Khushtil, honestly. I think बाकियों का फिर भी मेरा होता है कि आसिफ अली maybe इफ्तिखार का हो सकता है. Like again we said, he has the ability to counter attack, he has the ability to change gears, but Khushtil, I mean, he's the only one who seems the least capable of being in this team for me, and maybe Fakhr Zaman. बट ये मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आई कि खुशदिल को क्यों दोबारा रखा गया टीम के अंदर. रिजर्व में रखते तो चलें, दैट वुड मेक सेंस, बट अगेन रिजर्व में उसको नहीं रखा, उसको मेन स्क्वाड में भी तक रखा हुआ है क्योंकि वही एज आई थिंक यू वर मेंशनिंग कि स्पिन भी वो नहीं करा रहा, बैटिंग भी वो उस तरह से नहीं कर रहा. देयर आर बेटर ऑलराउंडर ऑप्शंस इन कंपेयर टू हिम एज वेल. उसकी जगह फहीम को रख लें अगर आपको ऑलराउंडर ही रखना है तो. एंड ऑल्सो यू गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, सो fast bowler might be a good option, but again Khushtil की मुझे समझ नहीं आई. I think mentality यही है कि like एक तो mentality ये है कि इसने PSL में perform किया है. There's no denying that, we can't take that away from him. He has been like the हाँ PSL में तो performance ने किया था, yes that's true, but वही बात है कि and he performed there as an all rounder. लेकिन PSL में उसको as an all rounder यूज किया गया था. यहाँ पे तो उसने बॉलिंग ही कोई नहीं कराई. वो भी है. और अगर एक टाइम पे कराई बॉलिंग तो वो उन्होंने इफ्तिखार से करवा ली, उन्होंने खुशदिल से फिर भी नहीं करवाई. एंड यू ऑलरेडी हैव सम रियली गुड ऑलराउंडर्स इन नवाज एंड शादाब, जिनकी वो लाइक प्रॉपर हाई क्वालिटी ऑलराउंडर्स जो बैटिंग से भी जिता सकते हैं मैच और बॉलिंग से भी जिता सकते हैं. सो उसमें खुशदिल की जगह एज सच नहीं बनती, ऑल्दो खुशदिल वाज at that level while he was playing in the previous season of the PSL कि वो मतलब इनके साथ विकेट भी बहुत निकाल रहा था, रन भी मार रहा था. He was generally competing with them as an all-rounder. But वही बात है कि अभी टीम में जिस तरह से वो उसकी पोजीशन है, and especially I think maybe it won't matter as much कि spinners वाली बात जिस तरह हम कह रहे थे यहाँ पे spinners को हिट करने वाला बंदा नहीं है. Probably ऑस्ट्रेलिया में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन at the same time it still feels like a wasted position. लेकिन again एक सवाल हमारा वही है कि अगर कुछ देर को नहीं डालते तो किसको डालते. I would have said आजम खान maybe, और क्योंकि आजम खान अभी भी स्क्वाड में नहीं है, सो दैट वुड हैव बीन माय पिक. शर्जील का भी हमने जिक्र किया था, बट नीदर ऑफ देम एक्चुअली मेड इट. और खुशदिल और ये सारा जो बेसिकली एशिया कप का स्क्वाड था, इट्स स्टिल बीन कैरीड ओवर विद सम एडिशंस. वो एक मतलब है इसमें. उसके अलावा हसनैन है. I don't really disagree with that. I like Hasnain, to be honest, maybe a bit more than you, but I think he actually gets in the squad as well. हाँ ये है कि उसको होना चाहिए था या दहानी को होना चाहिए था. वो ये है कि रिजर्व्स में इसकी जगह बनती थी या मेन स्क्वाड में दहानी की जगह बनती थी. Because इस टाइम पे he's been put in the main squad and Dahani is in the reserves. So that could have been flipped just as easily, to be honest. Why? I don't get it. Like this is one of those things where it's like, okay, why aren't they playing Dahani? Like I can see why they aren't, because वो यही कह रहे होंगे कि विकेट नहीं आ रही इसकी. Like विकेट तो बहुत सारी बॉलों की नहीं आ रही. हसनैन की भी विकेट नहीं आई, but उसको क्यों डाला instead of like Dahani? I don't get it. It's a much better bowler than her. I don't see them that different, but I think इसमें ये है कि I would argue the fact कि दहानी मतलब I think दोनों को स्क्वाड में होना चाहिए, but I would reverse their positions. I think I would put Hasnain in the reserves and I would put Dahani in the main squad.
अब उसको खिलाएं ना खिलाएं वो एक और बात है, लेकिन आई थिंक इन दैट सेंस क्योंकि दहानी ज़्यादा लंबे अरसे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक सर्किट में, PSL में भी परफॉर्म कर रहा है, तो उस तरह से आई थिंक एटलीस्ट फॉर दैट पार्ट उसको बनता है. Hasnan has performed better than I expected, especially given that he changed his action. And उसका जो स्पेल था आई थिंक जो उसने पहले कराया था in the श्रीलंका match that we प्लस lost to before the final, हाँ जो before the final किया था, I think he bowled a really good spell. तो लेकिन वो बात है कि दहानी also played pretty well against India, उसके बाद वो इंजर हो गया था, so even though विकेट ज़्यादा नहीं ली थी लेकिन उसका स्पेल बहुत अच्छा था. And he had a much smaller target as well, जो काफी small target वो defend कर रहा था, similar to that particular game as well. तो I think दोनों का जगह तो बनती है for sure, but वही बात है कि दहानी maybe deserves a bit more respect given that he's been performing for a longer period of time and he's been more consistent than Hasnan. Hasnan का PSL का record उतना खास नहीं है. वही बात है कि उस हिसाब से तो आई थिंक इसको जगह बननी चाहिए इसकी, बट बहरहाल आई एम स्टिल ग्लैड दैट इज इन द स्क्वाड. आई होप इसको मजीद अपॉर्चुनिटी मिले, बट वील सी. लगता मुश्किल ही है क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्पेशली once we get to the fast bowling उसमें तो इतना शदीद आपका कंपटीशन है कि किसी के लिए घुसना बारिंग लाइक सीरियस इंजरी बहुत मुश्किल होगा. उसके बाद मोहम्मद नवाज है, ऑब्वियस इंक्लूजन. मोहम्मद रिजवान ऑब्वियस इंक्लूजन. मोहम्मद वसीम का आई डोंट नो. मोहम्मद वसीम कब चक्कर ये है कि he got injured right before the World Cup, the Asia Cup, so he didn't really play. And he has a decent record. I think उसकी ये average बहुत अच्छी है, but I'm always afraid कि इसको कुट पड़ जाएगी, like especially against better attacks, better batting lineups. मुझे हमेशा I just don't trust मोहम्मद वसीम. मुझे शक ही पड़ा रहता है उस पर कि यार नहीं इसकी बॉलिंग शायद नहीं चलेगी या whatever, because he's always like very full. और अगर बॉल स्विंग नहीं करेगी तो उसको सीधे छक्के पड़ने, तो उस वजह से मुझे लगता है कि he could be a liability against a more aggressive team and against in more helpful conditions, because वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपका मतलब राउफ है, जिस हारिस राउफ है कि he is able to change up his bowling a bit, अडॉप्ट कर लेगा, थोड़ा मॉडिफाई कर लेगा, अपना पेस बदलेगा, वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं होगा. इसका ये है कि इसने एक ही तरीके से कराना है. अगर चल गया तो अमेजिंग, बहुत विकेट निकालेगा, इट विल बी ऑलमोस्ट अनप्लेएबल इफ द बॉल स्टार्ट स्विंगिंग. लेकिन अगर स्विंग बॉल नहीं करेगी तो फिर सीधे सीधे बल्ले पे आने हैं और छक्के जाने हैं, स्पेशली विद हिज पेस. तो वो मुझे थोड़ा सा इस पे होता है. आई एम ऑलवेज अ बिट डाउटफुल अबाउट हिम. आई डोंट नो बिकॉज़ वी हैवंट डिस्कस्ड हिम. एशिया में तो बिल्कुल आया नहीं था. सो व्हाट एग्जैक्टली आर योर थॉट्स ऑन हिम, बिकॉज़ आई हैव नॉट हर्ड देम सो फार. Yeah, I don't think so. When we're talking about like Dahani, चलो हसनैन को हमने फिर भी रख लिया. I don't think we should be preferring Wasim over, क्या कहते हैं, Dahani, because हाँ, Wasim is a very not yeah, Wasim is a very ordinary bowler, isn't he? He doesn't have anything special going there. Like I think he's one of the bowlers जो 140 पे clock नहीं करता, Dahani फिर भी करता है. I don't think he has some special swing or like seam. He's there. He's part of that वो जो जिस talent को हम groom करना चाह रहे हैं. And again, one thing I wanted to point out was कि we are like kind of prepping towards कि हम T20 में 4 horsemen of death बना सकते हैं, because we can have अगर Dhani को chance दे दें, we can have Naseem, Shaheen, Haris Rauf, and Dahani. These would be very deadly bowlers, and obviously Dahani has some way to go before he's like a finished product. But and obviously is sort of environment where he can grow himself pretty well. That's a missed opportunity. I don't think so. You see it that way, but I Wasim think so Hasnan is right up there as well, but Hasnan का skill level maybe उस level का नहीं है, consistency उस तरह की नहीं है. He could be that good, I feel. मुझे talent बहुत आता है. मैं भी कह रहा हूँ हसनैन के साथ मैं disagree नहीं करता. I see a lot of potential in Hasnan. But मुझे ये है कि शायद अभी वो उस level पे नहीं आया, and he needs to prove himself in a few more matches before I can give him that credit. Dahani I know can do it. इसलिए I feel like उसको ज़्यादा chances मिलने चाहिए. Because I feel like उसने वो डिजर्व करता है. और वसीम का आई नो रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब अगर आप जाकर देखेंगे आई थिंक हिज बॉलिंग एवरेज इज लाइक 19 और 20 और समथिंग, काफ़ी अच्छी है उसकी T20 बॉलिंग एवरेज. और उसका ये है कि अगेन मैंने कहा जब कंडीशंस आर गुड फॉर हिम तो इज रियली गुड,
बॉल अगर स्विंग कर रही है बिकॉज ऑफ हिज स्लिंगी एक्शन एंड ऑल दैट, उस तरह से वो फुल कराता है, यॉर्क करता रहता है कॉन्स्टेंटली, उस टाइम पे ही कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। लेकिन वो वाला सीन है जो उसका था अपना जो उसका सीन था, क्या नाम है अपना यार, जो शिनवारी था, कि शिनवारी जब अच्छी बॉलिंग कराता था तो ही वुड जस्ट ब्लो द ऑपोजिशन अवे, कि मतलब वो 5 विकेट ले लेगा 10 रनों के लिए और समथिंग। लेकिन जब अच्छी कंडीशन नहीं होगी तो फिर उसने कुट भी खाना नहीं। ही रिमाइंड मी बिट ऑफ दैट। धानी की एवरेज बहुत अच्छी थी ओडीआईज में, सॉरी धानी कह रहा हूँ, अपना जो शिनवारी था, शिनवारी की एवरेज भी अमेजिंग थी। बट वही मसला है कि जिस दिन वो नहीं चलेगा या कंडीशंस उसके हक में नहीं होंगी तो दैट पर्टिकुलर डे वो हमें पड़ जाएगा, और ये हमारे साथ हमेशा नॉकआउट मैचेस में होता है। तो उस वजह से हमेशा मैं थोड़ा वसीम जूनियर से थोड़ा डरता हूँ। बहरहाल नसीम शाह पे हम आते हैं, ऑब्वियस सिलेक्शन अगेन, नॉट मच टू से देयर। शाहीन शाह अफरीदी अगेन obvious thing, and surprisingly वही बात है कि जहाँ पे हमने, a lot of people have talked about this and I feel like everyone said के how well our batting lineup got along without Babar and they performed considerably well, although end पे जाके बहुत ही गंद हो गया, लेकिन बहरहाल overall I think still the batting lineup managed to hold up well enough without Babar performing. I think one of the biggest things that we missed out on was how well the bowling lineup actually held up without Shaheen, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शाहीन वाज लाइक स्पीयर हेड, उसके बगैर बिल्कुल नहीं चलेगा। देन सडनली all of our, especially our fast bowlers, like suddenly Naseem or Haris Rauf reached a level that we did not expect from them. That for me was the big thing. Dahani was also performing well. जो भी आ रहा था, they were doing well. Hasnain was doing well. And of course on the bowling end, जो spinners आपके थे, they were magnificent throughout the tournament. So उस तरह से I think that is something we sort of missed out on, how good the attack has been outside of Shaheen. And Shaheen को वापस आके भी sort of अपनी जगह बनानी पड़ेगी at this point, at least as a spearhead. रख तो उसको लेंगे, लेकिन वही है कि अगर आप इसको रखेंगे तो फिर आपको निकालेंगे कि आप इसको, आई गेस हसनैन को ही निकालेंगे, क्योंकि फिर ऑब्वियसली और किसी की जगह इतनी बनती नहीं है। बट वही बात है कि he will have to prove himself as the spearhead because other people have kind of emerged. Naseem has emerged as a spearhead and even Haris Rauf has emerged as one. So अभी उसको अपने आप को दोबारा से प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, I can still do things you guys can't. तो वो उसे भी आप अभी आके दोबारा से अपने आप को प्रूव करना होगा। that is going to be something हम देखते हैं कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। He's good enough obviously, but वही बात है, थोड़ी वो रिंग रस्ट भी होता है, थोड़ा टाइम लगता है अपने उसमें वापस आने में, इंजरी के फौरन बाद, स्पेशली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आप कितने से आप कंसिस्टेंटली खेलते रहे तो थोड़ा सा उसको टाइम तो लगेगा। आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी इमीडिएटली एज गुड, but I think the good thing is that we have a lot of other players around him who actually picked up their game, so he has a lot more support than he used to have. So I think उस तरह से that will facilitate him and to actually kind of come back into form. Although I don't know कि एकदम वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, but let's see, अभी तो टूर्नामेंट आ गया, अभी कुछ आपके मैचेस आ रहे हैं, उससे पता चल जाएगा कि शाहीन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। Then of course जिसकी हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, so yeah, so Shaheen ka it will be interesting to see how he kind of reestablishes himself as the spearhead in the squad, but we'll see कैसे होता है वो perform करता है. That'll be an interesting thing to watch out for. Shan Masood, a lot of people have been talking about him कि उसको लेके आए, has a really good record in the PSL. Only problem I think was that people mentioned that he was too one-dimensional, very similar to both क्या कहते हैं Rizwan and Babar. But I think वो बात है कि at this point they're going for consistency over the sort of non-performance that Fakhar has been providing for a while now. So उस तरह से उसको लेके आना भी देखते हैं how he sort of does that. His problem has always been his inability to translate his domestic form into international form. But I'm for this inclusion. I don't know आपका क्या opinion इस पे है? Yeah. Are you asking me? Oh yeah. So I guess I'm not too worried about him in so with the test ki agar aap uski average dekhein with first class, that obviously he isn't really a good red ball player. At least he now is a very decent red ball player. But jo shuru mein he wasn't really a good red ball player, but usko red ball team mein dal diya tha. When you look at his list A average, his domestic average in limited overs, that's a different story altogether. I think when you have you're gonna be good internationally. There's no doubt about it. Like, कम से कम अगर 60 या तो 40 बना लोगे, that's still very good, right? So yeah, I'm confident about him. My only again concern is the acceleration.
Yeah. which Masood cannot do. But हैदर अली आ गया है, so हैदर अली को ये किस पोजीशन में डालेंगे? टू डाउन डालेंगे? हैदर अली को, हाँ वही अब सवाल है कि हैदर अली को कहाँ डालेंगे. अब हैदर अली माइट बी रिप्लेसमेंट फॉर आइदर ऑफ द थ्री जिनका हमने जिक्र किया था, आइदर फॉर इफ्तिखार और खुशदिल और मे बी यू नो इवन आसिफ के लिए भी हो सकता है, बट प्रॉब्ली नॉट आसिफ. आसिफ तो बहुत स्पेशलाइज हो रहा है. तो मेरे हिसाब से फिर ये है कि आइदर इफ्तिखार या खुशदिल की जगह पे इसको रखेंगे. आई एम थिंकिंग कि उनमें से किसी एक का रिप्लेसमेंट होगा या उनमें से किसी एक के वो रिजर्व के तौर पे होगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे सेट द स्क्वाड अप. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. लेकिन वो फिर उस लेवल पे ही होगा. वो मतलब एक उसके आउट होने के बाद ही विल गेट प्लेयर्स हु कैन एक्चुअली चेंज गियर्स, जो हमने बात पहले भी की थी कि वी डोंट रियली हैव प्लेयर्स हु कैन चेंज गियर्स. और फखर जमान, वन थिंग ही डिड प्रोवाइड वाज दिस एबिलिटी टू हिट बिग वंस ही सेटल्ड. अनफॉर्चुनेटली जस्ट वाजंट बीइंग एबल टू get to that point in the last at least 6 or 7 matches. तो उस वजह से फिर he's been dropped out और फिर consistency के basis पे इसको लेके आ गए हैं. He will make runs, I think he. पर वही बात है कि that same issue that we have in terms of acceleration will always be there. So that remains to be seen. Usman Qadir, again, it depends. I think वही बात है कि Usman Qadir को if he's being brought in as a replacement for Shadab, so I think that's probably the wrong idea because वही बात है कि he's a bowler and you're getting him in for an all-rounder. So उस sense में तो Fahim Ashraf probably would have been a better choice. I don't really rate him that much. Usman Qadir, I think he's fine in the PSL and he does have like wicket-taking ability, but he's very inconsistent. Like उसकी line length थोड़ी off होती है. And उस वजह से I don't know if he should be in the squad. But what do you think? So you're right. हमारी जो टीम की combinations हैं in terms of like bowling, उस्मान कादिर की इसमें जगह बनती नहीं है logically. Like the only way I can think is नवाज को निकालना, but like नवाज को निकालना would be such a bad decision. So that like would not work. yeah. But at the That would same not work at point, all. I think they wanted like a spinner in reserve as well because fast bowlers के बहुत सारे reserves हैं, but they don't really have a spinner there. तो yeah. उस वजह से I think उसको probably रखा गया वहाँ पे just But to at the have same time, an option. it is worth mentioning कि क्या कहते हैं, he's an Australian bowler. He is a bowler जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में he had been performing with a good average. If you look at the condition, the spin bowling in Australia is horrific right now. Like अब ये देखो ना, Nathan Lyon is their top bowler. He's a good bowler, but you can judge the standard of their spin by the fact कि उनका top bowler is someone that averages 30. And उस दौर में he would have like 23 की under 20 average. That says a lot about his standards in that respect. Actually. Yeah. उसकी वजह से इट्स नो ब्रेनर कुछ तो खिलाए इसको खिलाना चाहिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस में. By that standard, I think Harith Rauf will probably perform really well as well. I mean, besides his actually excellent form that he's had, but उसके अलावा he has a lot of experience in Australia, and even Hasnan has decent amount of experience in Australia as well. So that is also actually to be a factor. But I think that's a good point. कि उसका Australia में भी experience है and he's a good record in Australia. So actually maybe not such a bad choice either. Fakhar Zaman in the reserves, we've talked about him, well deserved. Probably should have been thrown out even from that given his performance. But चलें, दोस्ती तो निभानी है बॉबी ने, तो कुछ ना कुछ तो होगा. उसके बाद Mohammad Haris. Actually forgot about Mohammad Haris, but I checked his record. It was kind of interesting. Because he sort of has a list average of 30 but strike rate of around like 100. Or T20 maybe has an average of around 23, 24 or the strike rate is 135. So he's, I think, a decent choice. Like someone, because I think बहुत high average भी हमें नहीं चाहिए, as we've seen with Sri Lanka's example. If someone is averaging around 24, 25, but they can bat at an average of 130, 140, that's good. I think वो काफ़ी है आपके लिए. क्योंकि वही बात है कि you don't need that many runs. If everyone makes some runs and all of them are going at like 150 to 200 के आसपास जा रहे हैं, तो that's enough. And so I think उस sense में he's actually a decent choice from the PSL as well. And I think he's performed well enough. मैंने कामरान I think गुलाम की बात की थी, who could be considered for this as well, but I think he's also a good choice. And I wouldn't disagree with it. Again, Shahnawaz Dahani is the last one which हम बात कर चुके हैं. I don't think he deserves to be in the reserves. He needs to be in the main squad. He's good enough to be. Although at this point, उसके लिए भी टीम में घुसना बहुत मुश्किल है.
with Shaheen coming back, obviously इसको drop करेंगे या they will drop him or Hasnan to bring him in. क्योंकि obviously ये तो इस point पे ना नवाज drop होगा ना शादाब drop होगा ना ही हारिस राउफ drop होगा और ना ही नसीम शाह drop होगा. So you already have like these 4 bowlers जो को पता नहीं तो एक की पोजीशन बचती है वो शाहीन है. So इस टाइम पे तो शाहीन को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मुझे टीम में जगह मिल गई है honestly. क्योंकि it's just so competition. क्या चीज? Just to we are like in for like a sight to behold, because now we have two bowlers that do phenomenal in the first overs. So we have Naseem ne proof kar diya, and Shaheen ka we already know, right? They strike in the very first over. That would be a nightmare for any team that is batting first or even batting second, because this, and then and if Babar is smart, he's gonna bring in Haris Rauf immediately after. So like the first 8 overs ideally should be nightmarish. So हमने power play बहुत अच्छा हमने mitigate कर bowling. Exactly. So I think overall, I mean, obviously, a lot of good players. Not that much to complain about. I think there's वो बात है, I don't think कुछ minor gripes हैं हमारे, but nothing so major कि हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार ये क्या बकवास है और किस तरह से उन्होंने कर दिया और ये इसको क्यों रख लिया उसको क्यों निकाल दिया. I'm fine with the selection. I think they've tried to cover up some of the cracks. But there are certain limitations. I have some sympathy for the selectors as well, because obviously this जो solution को चाहिए वो necessarily हमारे domestic में exist नहीं करते. They've tried to find some solutions. They've tried to find some players who can address those issues. और वही बात है कि उसमें से जिस हद तक वो cover कर सकते हैं, we'll have to see कि क्या वो करते हैं. But I think overall I'm not dissatisfied with the squad. Let's see how they perform. Hopefully they will do well. So yeah. Let's see क्या होता है इसमें scene. And any last thoughts on your end or something that we forgot to mention about the squad? Yeah, बाबर की टीम में जगह नहीं बनती. अजीब. बाबर की टीम. Exactly. Talk about timing, right? What is more रिजवान की delivering? ये दोनों की जगह नहीं बनती. Who was mentioning this? You were mentioning this on the group, I think. यार इनकी जगह नहीं बनती टीम में. Who was this expert? बोल रहा था ना. इरफू बोल रहा था कि और बोल रहा था. इरफू तो कह रहा था there was some other expert probably जो टीवी पे था, उसने भी ये बात की थी कि रिजवान की जगह नहीं बनती. मेरी उसने भी कहा था, I don't know, there was something about that. मैंने कहा यार देखें मतलब क्या टाइम आ गया कि नंबर 1 और नंबर 2 हम कह रहे हैं कि यार उनकी जगह ही नहीं बनती हमारी टीम में. I mean I agree, वो उनमें से एक बंदा बुरी फॉर्म में था और एक बंदे ने रिसेंटली बुरी इनिंग्स खेली है. लेकिन बहरहाल I think that's maybe a bit harsh on them. And let's see अभी क्या होता है स्क्वाड में. So far तो I feel like they've done what they can, and अब देखते हैं कि उसमें क्या सीन होता है. चलें ठीक है यार, till next time, and we'll talk soon. ठीक है चलें. Okay everyone, हाफिज़.